बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली के आज दोपहर होने वाले इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। एजेंडे के मुताबिक डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में पाकिस्तान को डिजिटल कौम बनाने का बिल मुतारिफ करवाया जाएगा। डिजिटल मईशत, डिजिटल माशरा, डिजिटल गवर्नेंस से मुताल्लिक बिल वज़ीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा पेश करेंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कौमी फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल पेश करेंगे। कौमी फॉरेंसिक एजेंसी के क़याम का बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल भी पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस बिल को पेश करेंगे। और अब आपको बताएं कि हर पाकिस्तानी की डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल शनाख्त बनाने के लिए कानून साजी का बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल कौमी असम्बली के एजेंडे में भी शामिल है, जिसे वज़ीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा ख्वाजा पेश करेंगी। डिजिटल शनाख्त बनाने के बिल का मकसद समाजी, इक़्तिसादी और गवर्नेंस डेटा तैयार करना है। कानून साजी पाकिस्तान को डिजिटल कौम में तब्दील करने, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल मईशत और डिजिटल गवर्नेंस को फ़ाल करने के लिए फराहम करेगी। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी। आसिफ, बहुत अहम बिल हैं जो आज पेश होने जा रहे हैं। दो बुनियादी तौर पर बिल हैं जो आज पेश होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि क्या इनका मतन क्या है, क्या इनका मकसद है, और यकीनन जब कोई बिल आता है तो पहले उसे तशवीश की नज़र से देखा जाता है, चौकन्ना होकर देखना पड़ता है। जी बिल्कुल, आज जो बहुत अहम बिल पेश होने जा रहा है वो बिल ये है कि हर पाकिस्तानी शहरी की एक डिजिटल शनाख्त बनाने के लिए कानून साजी जो है उसका बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और कौमी असम्बली का जो एजेंडा जारी हुआ है उसके मुताबिक शज़ा फातिमा ख्वाजा जो हैं वो इस बिल को पेश करेंगी। और एजेंडे में ये बताया गया है कि बिल का मकसद समाजी, इक़्तिसादी, गवर्नेंस का डाटा मुरतब करना है। कानून साजी पाकिस्तान बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी। इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा, इसके हवाले से खबर हमारे पास है। वज़ीर ममलिकत IT शज़ा फातिमा का कहना है कि हुकूमत आज कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पेश करने जा रही है। मुजवज़ा कानून के तहत दो अहम इदारे कायम किए जाने की तजवीज़ है। नेशनल डिजिटल कमीशन की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की सरबराही सरकर्दा माहिरीन को दी जाएगी। Today I am very proud to say that at 5 p.m. in the National Assembly, the legislation for Digital Nation Pakistan will be introduced, and we're hoping that within the next few days it will be passed as a law, with National Digital Commission coming into form, with Prime Minister of Pakistan heading it, all 4 chief ministers being a part of it, and heads of all major regulatory bodies in the country, whether it's PTA, NADRA, State Bank, and other important data pools that Pakistan holds, all the heads and important ministers be a part of it. It will be followed by a Pakistan Digital Authority, which will ensure a robust and comprehensive national framework and a master plan blueprint for national digitization. The digitization intends to focus on 3 verticals: economy, governance, and society. And we're hoping that with the creation of a unified digital identity for every citizen of Pakistan, we will be well on the pathway towards unlocking the true potential that this country holds. बराह रास्त ले चले इस्लामाबाद। फाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Of peace, of harmony through our culture, we need to open up to the world. We need to tell the world what we're about and what we mean. And as I said, we have so much to tell the world in terms of our indigenous people, for example. Starting from the indigenous people of Gilgit-Baltistan, high up in the north, going to the Thal deserts down south. We've been blessed with a landscape which has all seasons, which has all terrain. The only problem with us is, as I mentioned, the misconception about us.
and we've started working towards building a positive image. We're inviting the world to come to Pakistan. We've seen an increase in the number of tourists that come to Pakistan, especially up north. And every delegation, because we've had so many foreign delegations coming to Pakistan, we were privileged enough to host the Shanghai Cooperation Organization Summit, and a summit of this stature after almost 27 years. People who come to Pakistan, they leave with good memories, they leave with fond memories, and their perception about Pakistan, it takes a 180-degree turn from what they believed and what they believed after seeing, because seeing is believing. And you know, as I mentioned, I represent 70,000 Christian voters. So every Sunday, when I attend a mass or I'm there discussing several issues, there also lies, as far as religious harmony is concerned, there also lies the problem of misconceptions and misunderstandings. Because someone who preaches violence, someone who preaches intolerance, someone who preaches that we should quarrel with each other is not a friend. We must know the difference between friend and foe. Because our religion does not teach us intolerance. And when I was contesting the elections, you know, I went into these thickly populated Christian localities, and I could sense fear in the eyes of the people. And I said, you know what? I'm going to conduct an open mic. I'm going to sit here in the middle of the intersection for 3 hours, and I want you to come up to me and ask me any question that you want. You see, dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. And it wasn't easy. I had to face very tough questions. But through reasoning, through logic, and by addressing the core issues, I was able to gain their trust. So, building a positive image, eradicating misconceptions, always happens through dialogue. There is no problem in the world that you cannot solve without dialogue. Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. And when we talk about our diversity here in Pakistan and the diverse people that coexist in Pakistan, I think we need to bring in an air of positivity. And as the government, we're totally committed towards this cause. And I often tell not only government officials, but people we meet in the private sector, to be ambassadors of Pakistan, to carry a good message of Pakistan. Because so many diverse cultures, so many diverse languages, so many diverse backgrounds, and so many indigenous people that still exist in Pakistan. And these indigenous people, we are trying our best to revive the dying arts that they practice. In the area of Gilgit-Baltistan, there is an art through which they do certain calculations according to the sun. It's called Surya something, which we are trying to revive now. And we are investing towards that. And I would also like to express my gratitude to all our partners, especially the Aga Khan Development Network, which has done such wonderful work for the indigenous people in all these areas. So when I say as the government, we stand committed, wherever we've gone the world over, we've seen immense respect for Pakistan. वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ज़िला खुर्रम में शाहराहों की बंदिश से अशिया खुरनोश, पेट्रोल, गैस, अद्वियात न मिलने से शहरी वैसे ही परेशान है। ऐसे में शदीद सर्दी में खुश्क लकड़ी की भी शदीद किल्लत हो गई है। ज़िला खुर्रम में पेशावर, पारा, चनार, मरकज़ी शाहरा समेत आम दरख्त के तमाम रास्ते तहाल बंद है। ज़िला खुर्रम में क़याम अमन के लिए कोहाट में जारी ग्रैंड आम जरगे में अब तक कोई वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो सकी।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ کرم گرینڈ جرگہ ختم نہیں ہوا. فریقین نے مزید مشاورت کے لیے 1 دن کا وقت مانگا ہے. 1 دن کا وقفہ بنکرز کے خاتمے اسلحہ جمع کرنے کے حوالے سے مشاورت کے لیے کیا ہے. ایک بیان میں بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ کابینہ کے فیصلے کے مطابق اسلحہ جمع کرانا اور بنکرز کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے. مستقل امن کے قیام کے لیے بنکرز کا خاتمہ اور علاقے کو اسلحے سے پاک کرانا لازمی ہے. حکومت کو سڑک کی بندش کے باعث مسائل کا بخوبی اندازہ ہے. کرم کا مسئلہ 120 سال پرانا ہے. مستقل خاتمے میں وقت لگ سکتا ہے. رہنما تحریک انصاف اسد قیصر کی جیو نیوز سے گفتگو. ملک کی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر جرگہ بلانے پر غور کر رہے ہیں. اسد قیصر نے کہا ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر جرگہ بلانے پر غور کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے جیو نیوز سے گفتگو میں یہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جرگے میں احتجاج سے متعلق آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا. حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو ہم تیار ہیں. جرگے میں اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں قبائلی عمائدین کو بھی بلایا جائے گا.